So let us study the concept of monetary policy. So what is monetary policy? Monetary policy is basically a part of the economic policy through which the RBI regulates the supply of money in the economy. So monetary policy is one of the component of economic policy. Now economic policy has various components or parts such as there is industrial policy, there is foreign trade policy, etc. Similarly, monetary policy is also a part of economic policy. And this monetary policy is drafted and implemented by the Reserve Bank of India, which is the Central Bank of India. It is drafted and implemented by RBI, and its objective is to regulate the supply of money in the economy. Here, RBI uses various monetary instruments such as statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, CRR, etc., to achieve the objectives which are specified in the RBI Act. Therefore, RBI uses monetary instruments such as SLR, CRR to achieve the objectives which are mentioned in the RBI Act. Now, let us study the objectives of the monetary policy. The first main objective of the monetary policy is the controlling the prices of goods and services. So the first main objective is price stability, which means controlling the inflation. The second objective of the monetary policy is to stimulate economic growth. RBI tries to stimulate the economic growth by increasing the aggregate demand of goods and services in the economy. We will study this in further detail in the subsequent lecture. So price control and stimulating economic growth, these are the two primary objectives of the monetary policy. Other objectives are exchange rate stability. So after exchange rate stability, the next important function is the stability of the financial sector of the country. By stability of the financial sector, we mean that the banks are properly regulated, because financial sector comprises of banks, it comprises of non-banking financial companies, etc. So all these entities should be well regulated so that there is no financial crisis in the economy. The other objectives of monetary policies are employment generation, poverty alleviation, etc. RBI can boost employment generation by directing the banks to issue more loans to the micro, small and medium enterprises, who in turn can generate more employment in the economy. Similarly, if there is employment generation in the economy, then it will reduce the poverty in the country. But the first two objectives, which are price stability and stimulating economic growth, these two are the main objectives of the RBI or monetary policy of the country. चलिए अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को मॉनेटरी जो मनी सप्लाई है इन द इकॉनमी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी या डिक्रीज़ करनी पड़ेगी. अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई शुड बी डिक्रीज्ड. इन्फ्लेशन तब होती है जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा होता है, और वी कैन से दैट कि इकॉनमी के अंदर जो मनी है वो चीपली अवेलेबल होती है. फॉर एग्जांपल बैंक्स जो हैं अगर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन प्रोवाइड कर देंगे, देन एवरीवन विल टेक द लोन. व्हेन एवरीवन विल टेक द लोन, देन एवरीवन विल हैव मनी टू स्पेंड. बट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो लिमिटेड होती है, तो इस कारण से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन हो जाएगी. इसलिए आरबीआई को मनी सप्लाई रिड्यूस करनी पड़ेगी इफ़ इट हैज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. नाउ द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. द क्वेश्चन विच कम्स नाउ इज, अगर आरबीआई को इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट करनी है तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी होगी या डिक्रीज़ करनी होगी टू अचीव द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी. नाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस, और बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए पैसा चाहिए रहता है. जब उन्हें पैसा कम ब्याज दर पर अवेलेबल होगा तभी वो फैक्ट्री लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे. इट मीन्स दैट आरबीआई हैज़ टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. RBI has to increase the money supply to stimulate economic growth.
तो यहाँ पर आरबीआई एक डायलेमा फेस करता है, बिकॉज आरबीआई को अगर प्राइस कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, देन इट हैज़ टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, एंड इफ आरबीआई हैज़ टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, देन आरबीआई हैज़ टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. So what is the monetary policy dilemma? Monetary policy dilemma is the trade-off between the two objectives of RBI, which are price stability on the one side and the stimulating economic growth on the another side. Now the next question is whether monetary policy is effective in boosting the aggregate supply in short term. So whether monetary policy is effective in boosting the aggregate supply of goods and services in long term. So the answer, so this is not long term, this is short term. So whether it is effective in boosting aggregate supply of goods and services in short term. So if RBI uses monetary policy tools, then whether that those tools can affect the supply of goods and services in short term. The answer to this question is no. No, because the supply of goods and services, it depends on many factors. It depends on the industrial policy, it depends on the infrastructure, etc. So monetary policy has very little impact on the aggregate supply of goods and services in short term. In long term, yes, it will have impact, because monetary policy impacts the credit availability to the businesses. So in the long term it will have impact, but in the short term it doesn't impact the aggregate supply. However, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज़ इफेक्टिव इन बूस्टिंग और इन कंट्रोलिंग द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. Therefore monetary policy it impacts the demand of goods and services in the economy. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई को डिमांड बूस्ट करनी है तो आरबीआई ईजी क्रेडिट पॉलिसी, ईजी मनी अवेलेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड करवाएगी, जिससे लोगों के पास पैसा आएगा. लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे, जिससे कि डिमांड इंक्रीज़ होगी. इसके अपोजिट अगर आरबीआई को डिमांड कम करनी है, then RBI will use the monetary policy tools. These tools we will study in the subsequent lecture. So RBI will use the monetary policy tool to suck the money out of the economy. So RBI will decrease the supply of money in the economy. Now people will have less money. लोगों के पास कम पैसा होगा खर्चने के लिए. जब वो कम खर्चा करेंगे तो डिमांड भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्रीज हो जाएगी. तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ लेस इम्पैक्ट और मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द एग्रीगेट सप्लाई, एंड ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट फ्रॉम 1947 to 2014 the objective of the RBI was to maintain a balance between price stability and stimulating economic growth. So maintaining a balance between these two objectives, objective 1 and objective 2, was the objective of the RBI from 1947 to 2014. लेकिन 2015 के बाद जो प्राइस स्टेबिलिटी है, दैट इज़ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इट बिकेम द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई. 1947 से 2014 तक बैलेंस बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई वी कैन से. लेकिन 2015 के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई नाउ आफ्टर 2015. देयरफॉर since 2015 prime objective of monetary policy is price control, which is also known as inflation targeting. So this was about the monetary policy and its objective. In the next lecture we will study about the instruments of monetary policy, the instruments which are used by RBI to control the supply of money in the economy.